Welcome to the 8th lecture of the course Introduction to Computer and Programming. In this lecture, I will tell you about the nested if-else statement, logical operator, and conditional operator, and nested conditional operator. Let's overview our previous lecture. In the previous lecture, I gave you the example program of printf statement and scanf statement, decision control structures, relational operators in C, and relational operators are basically arithmetic operators and equity operators, if statement and if-else statement. In today's lecture, I will tell you about the nested if-else statement, how we can use if statement, if else statement within the if block of statement or else block. Then I will tell you about the logical operator in C, and conditional operator in C, and nested conditional operator. So when we say nested if else statement और नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर और नेस्टेड लूप, इसका मतलब ये होता है कि एक इफ एल्स के अंदर या एक इफ ब्लॉक के अंदर एक और इफ या इफ एल्स ब्लॉक आ रहा है, या एक कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर एक और कंडीशनल ऑपरेटर आ रहा है. दैट मीन्स दिस इज नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर. वो नेस्टिंग बना रहे हैं. सो एक कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर एक और कंडीशनल ऑपरेटर आ सकता है. वी विल सी इन द एग्जाम्पल. और लूप की अगर एग्जाम्पल लें तो वी हैव एन इनर लूप एंड द आउटर लूप. A loop inside the loop, it is called nested loop. I will show you the nested loop जब हम loop वाला lecture देखेंगे. So nested if else. It is possible to write an entire if else statement with either in the if statement block or the else statement block. आप पूरा का पूरा एक if स्टेटमेंट या if else स्टेटमेंट एक if ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं या else ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं. एक और चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि else ब्लॉक कभी भी स्टैंड अलोन नहीं आता. यू कैन हैव स्टैंड अलोन if स्टेटमेंट दैट हैज़ नो else ब्लॉक, बट यू कैन नॉट हैव a statement that just contains else block with no if block. So else is always associated with if block. It is logical. So if condition is true, do this, else do this, right? So if we have a standalone else like some statement, then else do this. So there's nothing we have to check before executing else. So that makes no sense that we write else without if. So it is possible to write if statement only without the else block, or you can write if statement with the else block, but you cannot write else statement without if block. Let's see an example, a flowchart of nested if else. So this flowchart, अब ये जो फ्लो चार्ट है इसमें आप नंबर 1 या नंबर 2 एंटर करेंगे, एंड देन इट विल टेल यू वेदर यू हैव एंटर 1, 2 और अदर देन 1 और 2, राइट? सो यू डिस्प्ले द मैसेज फर्स्ट, एंटर either 1 or 2, then you read that number in a variable x, read x, and for reading is the input operation, display is the output operation. Again, display is the output operation and you have to use printf statement for that, and read is the input operation and you have to use scanf statement for that. Then we have a decision if x is equal to 1. Now you remember this double equal sign. A single equal sign in C is the assignment sign. That means you are assigning the right hand side value to the variable on the left side, right? But double equal sign means that you are now comparing the value on the left side and the right side. So left side per we have a variable, that means we are comparing the value of the variable with the integer constant 1. If it is 1, it will display the message you entered 1 and the flowchart ends. But if it is not 1, then
we have two options. Either it could be 2 or it could be other than 1 or 2, right? So again we have a decision box. If x is not equal to 1, then we can check whether x is equal to 2, and if it is equal to 2, it will display the message you entered 1, and if it is not, it will display the message you enter other than 1 or 2. Now in this flow chart you can see there is a decision block inside. So this is the inner decision block and this is the outer decision block. So this is the inner decision block, or I can say this is the inner if-else statement, and this is the outer decision block, or I can say this is the outer if-else statement. So outer if-else statement में आप देखें, if the condition is true, this is the if block. If the condition is false, this is the else block, and within the else block you have another if-else. So if x is equal to 2, this is the inner block, inner if-else if block, और inner if-else का ये else block होगा. Then the program ends. So this is called nested if-else. Let's go to the program. So this is the program. I have already written the program for you. We declare a variable x because we need to store the value input by the user. So this is a declaration of a variable. So before using a variable, you have to declare it first. Declaration means you have to tell the name of the variable, you have to tell the type of the variable. And there are 4 things associated with the variable. The first one is the variable name. Variable has value, variable has type, and type means कि उस वेरिएबल में आप किस टाइप की वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या वो वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है. एंड द फोर्थ थिंग इज द memory address. So variable has a memory that has an address. You remember I told you these things in our lecture number 4 when you start programming. So a variable has a memory and you can access that memory using AND operator. So in scanf function the second parameter is AND x. That means कि आप scanf function में पहली चीज़ बताते हो कि किस टाइप की वैल्यू इनपुट लेनी है और किस मेमोरी एड्रेस में स्टोर करनी है. मैं ये चीज़ें बार बार रिवाइज करता रहूँगा. इसका फ़ायदा ये होगा कि ये चीज़ें आपको देन याद हो जाएंगी, आपके माइंड में आ जाएंगी. So scanf function में the first thing you mention is the type of the input and the second thing is the memory address कि वो input किस memory address पर store करनी है. So in this program it first display the message enter either 1 or 2, then you display that message, you take the input, then you check if the input is 1, then there's a printf statement. If this condition is true, then this statement will be executed. If this condition, that means the condition, if condition is false, then this statement won't be executed. अब जब ये condition false होगी तो वो else block में आ जाएगा. And now this whole is the else block. This whole is the else block that is associated with this if. वो इस if के साथ associated है. ये तमाम का तमाम else block, right? And within the else block we have another if else block. हमारे पास एक और if else block है. Within the else block we have another if else block. ठीक है? So this is called nested if else. It is quite possible that we could have only if statement within the else block, or we could have an if else statement within the if block. I will show you the different forms of the nested if else block, right, later in this lecture. So in the else part you first check if the x is equal to 2 or not. If the value of x is equal to 2, you display the message you enter 2,
and if it is not, then that means the value is not equal to 1 and the value is not equal to 2. That means the value is other than 1 or 2. Then in the else part, you display the message other than 1 or 2. So remember one point: if the condition in the if statement is true, only the if block will be executed and else block won't be executed. If this condition is true, this else block won't be executed. But if this condition is false, then this else block will be executed. अब जब कंट्रोल इस else block में आएगा तो सबसे पहले इस if को चेक करेगा. If the condition in the if statement, in this if statement is true, it will execute this part, otherwise it will execute else part. So अगर ये कंडीशन ट्रू होगी वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, वो else पार्ट में नहीं आएगा. बट इफ दैट कंडीशन इज फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तब वो इस printf को एग्जीक्यूट नहीं करेगा. इट विल कम इन द else block and execute this printf statement. Right? Now let's execute this program. Enter either 1 or 2. Let's say we entered number 2. So it display the message you enter 2. Now run it again. Now enter 1, 2. And display the message you enter other than 1 or 2. Right? So when you enter 12, it will check 12 is equal to 1. Condition is false. It will come in the else block. And else block, it check the if statement first. The condition is 12 is equal to 2. The condition is false. If that condition is false, it will come in the else block and it will execute this. And when this printf statement is executed, it will display the message on the screen you enter other than 1 or 2. I hope you understand this program. Now let's see different forms of if statement. So this is a very simple form of if statement. If condition, do this. Now do this is any C statement, right? So if condition, do this. Now here in this particular form of if statement, आपके पास if block क्या है? This is an if block. And if block consists of only a single statement. हमने previous program में भी देखा था, अभी जो मैंने आपको प्रोग्राम शो करवाया है जिसमें आपने 1 या 2 एंटर करना था, इस प्रोग्राम में भी जितनी भी इफ स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो आउटर इफ हो चाहे वो इनर इफ स्टेटमेंट हो, उसमें इफ ब्लॉक जो है इट कंटेन्स ओनली वन स्टेटमेंट, दैट इज प्रिंटफ स्टेटमेंट. एल्स ब्लॉक, जो इनर एल्स ब्लॉक है, दैट कंटेन्स वन स्टेटमेंट दैट इज प्रिंटफ. जबकि जो आउटर एल्स ब्लॉक है, जो आउटर इफ एल्स के साथ जो एल्स ब्लॉक आ रहा है, उसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट नहीं आ रही है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ रही हैं. मल्टीपल स्टेटमेंट कौन सी आ रही हैं? वी हैव अ कंप्लीट सेपरेट इफ एल्स ब्लॉक विद इन द आउटर एल्स ब्लॉक, राइट? Now this is another form of if statement. If condition, do this and this. And do this and this means we have more than one statements. And in this particular form, this is the block, this is the if block, or we can say if statement body. So when this condition is true, both these statements will be executed. If this condition is false, none of these statement gets executed. Just remember this point. if block कब execute होगा? जब if की condition true होगी. जब if की condition false हो जाएगी तो if ब्लॉक में जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो एक स्टेटमेंट है या वो मोर देन वन स्टेटमेंट्स हैं, none of these statement will be executed if the condition become false. This is the third form of the if statement, although it is if else statement. So if condition, now here what is the if block and what is the else block? This is the if block and this is else block. Else block कब execute होगा? When the condition in the if, this condition become false, then this else block will be executed. If this condition is true, then this block will be executed, right? Let's see another form. Now in this if else statement, we have more than one statement in the if block and more than one statement in the else block. This is the if block, this is else block. ये
जो इफ एल्स ब्लॉक है ये बिल्कुल सेम उसी फॉर्म का है जिसमें अभी हमने प्रीवियस प्रोग्राम में देखा था. सो वी हैव अ सिंगल स्टेटमेंट इन द if block and we have if else statement within the else block, within the outer else block. So outer if else block में जो else block आ रहा है, इस else block में आपके पास एक और if else block आ रहा है. Now in the inner if else block, this is the if block and this is the else block. और else block कब execute होगा? Whenever the condition in the if is false. And if block कब execute होगा? When the condition in the if statement is true. Now this is another form जिसमें हमारे पास if statement के अंदर या if block के अंदर एक और if else block आ रहा है. Now this complete is the if block, this is the else block, and within the outer if block we have another if else block, and this is the if block and nested if else block में हमारे पास else block ये आ रहा है. ठीक है, सो इसकी एग्जीक्यूशन किस पे डिपेंड करती है? इस कंडीशन पर. Although इस कंडीशन पे भी डिपेंड करती है. If this condition is true and this condition is true, then this will be executed. If this condition is true and this condition is false, then the else block is executed. And if this condition is true, then if block will be executed. If this condition is false, then else block will be executed. I hope you understand the if else block or nested if else block और इसकी कितनी forms बन सकती हैं. Now let's see what are the logical operators. Logical operators आपने पहले भी देखे हुए हैं. Second lecture में we have seen AND operator, AND logic operator, OR operator and NOT operator, AND logical operator. So true if both conditions are true. So ये जो logical operators हैं, they are usually used to make a compound condition. कंपाउंड कंडीशन बनाने के लिए यूज हो सकते हैं. किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल इन दिस इफ स्टेटमेंट वी हैव अ कंडीशन जेंडर इज इक्वल टू 1. लेट्स से आपने रखा था कि जेंडर, इफ द जेंडर इज 1, जेंडर इज अ इंटीजर वेरिएबल एंड इफ इट इज 1 दैट मीन्स इट इज मेल एंड इफ इट इज 0 देन you can say it is female, right? So gender is, you can say it's a integer variable. So if the gender is 1 and the age is greater than 65, so दो conditions हैं. Gender is equal to 1. It could be a separate condition, but now it is a part of a compound condition. Compound condition एक ऐसी condition होती है जिसमें हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी conditions आ रही हैं, एक से ज़्यादा छोटी conditions आ रही हैं. So this is a small condition, gender is equal to 1. The result of this condition and the result of this condition, if the result of both condition is true, then इस whole compound condition का result true आएगा. Logical operator, logical OR operator, true if either of the condition is true. So दोनों में से कोई एक condition भी true हो जाए. Now the small condition is semester average is greater than 90 and the final exam is greater than 90, then it will print the statement student grade is A. So एक condition क्या आ रही है? semester average is greater than 90 और साथ और का ऑपरेटर है और final exam is greater than 90. So दो conditions हैं, दोनों को साथ मिला के लिखा है यूजिंग और ऑपरेटर. दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो हमारे पास ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, बिकॉज एक भी ट्रू होने का मतलब है कि इस कंपाउंड स्टेटमेंट का रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ रहा है. दीज टू आर द स्मॉल स्टेटमेंट, जेंडर इज इक्वल टू 1 एंड एज इज ग्रेटर देन 65, and these two are the smaller statement within the compound condition or smaller condition within the compound condition. Next operator is logical NOT operator. So returns true when its condition is false and vice versa. So if the condition is true
it will return you false, and if the condition is false, it will return you true, because not true is false and not false is true. Let's say grade, if not grade equal to 20. So in this statement, first जो पहली चीज़ execute होगी, that is within the parenthesis. ये parenthesis साथ हैं, पहले ये चीज़ execute होगी, grade equals to 20. If this is true, true कब होगा? जब grade 20, grade की जो value है, grade जो variable है, integer variable, उसकी value अगर 20 है, then the result of this condition, जो कि inner condition आ रही है, इसका result true आएगा तो उसके साथ जब not लगेगा, not true, it becomes false. So first this part will be executed, and if this is false, then we have not false, and not false means true. So if में हमारे पास जो चीज़ आएगी, that is true, and in this case it will print the message hello world. And if the grade equals to 20 is true, and then it becomes not true, and not true means false, और जब false होगी, if false, then hello world जो statement है, it won't be printed on the screen. The equivalent form of this statement condition is grade not equal to 20. You can check like this as well. So they both are equal, right? If the, for example, if the grade is 10, so the result of first statement is 10 equals to 20, condition is false, right? Now we have not operator here, so not false is true, right? And for this, so not false is true, and this printf will be executed, and the hello world message will be printed on the screen. Now here, if we have 10 not equal to 20, that is true. 10 is not equal to 20, it's true statement, so the string hello world will be printed on the screen. Logical operators, there are some examples. So we have two operands, x and y. So value of x is 0 0, so not x, x is 0, so not 0 means true, 0 means false, not 0 means true, so that is 1. Y is 0, not y is 1. Now the result of AND operator, so both are 0 and 0, this is 0, and 0 or 0, this is also 0, because both are 0. Okay, what if we have 0 and non-zero value? Any non-zero value y have, right? So not y means 1, because not x means 1, because not x means not 0, and not 0 means 1. And not y, value of y is any non-zero value, let's say any non-zero value minus 10. So not minus 10 is 0, because minus 10 is a non-zero value, and non-zero value means true, so not true is false, and we represent false with 0. Now AND operator, AND, so 0 and any non-zero value, so that is 0, because for AND operator the output is 1 if both x and y are 1. So OR operator में देखें 0 and non-zero value, so we have here 1. You can correct this thing in your book, in your letter C book as well, जहाँ पर इस point पे आपके पास 0 दिया हुआ है, but this should be 1. So x or any non-zero value, it is true, so आपके पास यहाँ पर 1 आएगा, because we have a true part here, so it becomes false or true, the result is true. So non-zero value, x have non-zero value, y is 0. In this particular case, not x is not non-zero, that means 0, and not 0 means 1. Not 0 is not false means true, and for true we represent true with 1. Now x and y, x is non-zero value and y is 0, so the output is 0. So output 1 कब होगी? जब दोनों की दोनों जो AND के जो left side है and the right side of the AND operator is non-zero. Then x or y,
So non-zero or 0, that means true, 1. So if both are non-zero, not x is 0, not y is also 0. So not non-zero is 0, and both are non-zero, so non-zero and non-zero is 1, and this is also 1. Non-zero or non-zero, that is also 1. Let's see the sample program 1. To calculate the division, so let's say we input marks of 5 different subjects. Rules are, if the percentage is above or equal to 60, we grant it first division. If the percentage is between 50 to 59, then it display the message second division. If the percentage is between 40 to 49, it display the message third division, and if percentage is less than 40, it display the message fail. Now the solution, we can do this or solve this problem using nested if else and using logical operator. हम दोनों अप्रोचेस से सॉल्व कर सकते हैं. लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं. ऑफ कोर्स लॉजिकल ऑपरेटर में आपके पास इफ एल्स ही यूज होंगे. लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास हैं और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, और वो तमाम ऑपरेटर्स सिंपल स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं, सो दैट इट बिकम अ कंपाउंड स्टेटमेंट. बट दीज कंपाउंड स्टेटमेंट आर द पार्ट ऑफ if statement in this particular example. Let's go to that program. जिसमें we will see the example, we will solve the same problem with nested if else. Okay, this is the program. So we declare M1 variable, M2, M3, M4, M5 and PER. I think PER is for percentage. So why we have M1, M2, M3, M4, M5 variables? Is it a valid variable name? Yes, it starts with the small case or uppercase alphabet. It doesn't contain any blank spaces nor comma, neither special symbol except underscore, and yeah, it's a valid variable name. Is it meaningful? A little bit. It's meaningful. M stand for marks, marks 1. M stand for marks. M1 is marks 1, M2 is marks 2, and M5 is marks 5, and PER is for percentage. After declaring variables, we have a printf statement. We want to print and the message that what value user is going to input to the program, and that message is enter marks in 5 different subjects. Now in scanf you can see we are taking input a value in 5 different variables. So पहले variable की value input जो लेने जा रहे हैं, that is %d. So we write a variable name over here. Second variable is the type is %d. We write the variable name over here, and so on. So these 5 variables are input in this statement, and the type of these 5 element is integer. How I know? Because of this %d sign. So the type of the input is integer, और वो इस particular memory address में store कर देंगे. And M1 mean M1 variable को जो memory associated हुई थी उस memory का जो address है, that can be accessible using and M, right? Then we can calculate percentage as we sum up all the marks and divide it by 5, right? Then we get the percentage. Now we have if statement. If percentage is greater than 60, then it will print this statement. If the condition become false, it will come in the else block, और else block इस if statement का के साथ ये else block associated है, और ये else block कितना बड़ा है? This is the complete else block over here, right? And within this else block you have another if else block. So this is an example of nested if else, and within this else block we have another if else block. So nesting. So if this condition percentage is greater than 60 become false, it will come over here and check if the percentage is greater than 50 or not. If it is not, it will come in the else block, and in the else block we have another condition. If the percentage is greater than 40,
is greater than or equal to 40 or not. If it is greater than or equal to 40, it will display the message third division. If it is not, it display the message fail. Now let's compile this program first and run it. So enter marks in 5 different subjects. Let's say we enter 10, 10, 10, 10, 10. Now the message we get is fail. Why? Because 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, that is 50, divided by 10 is 10. So these marks are very less actually. So let's say if I enter 45, 45, 45, 45, 45, 45. Now the average is 45. This is the third division. Okay. Now let's go to the slides. Now let's see the same program using logical operators. So this is the same program जो भी हमने देखा था, जिसको हमने if else स्टेटमेंट से सॉल्व किया था. Now we solve it using logical operators. और logical operators कौन से हमने यूज किए हैं? We use logical and operator. So logical and operator को आप C प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं? You put the double and operator. जो double and का साइन है, that is above the digit 7 or digit 8 on the keyboard. So उसमें उसी तरह से हमने वेरिएबल डिक्लेयर्स किए पहले. Then we take the input. यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको फिर बताता जाऊँ कि scanf, you can use a single scanf statement to input multiple values, और it is also possible कि उनमें से कुछ values की type float हो, कुछ की type integer हो, कुछ की type character हो, या सबकी type integer हो, या सबकी type float हो, या सबकी type character हो, whatever is that type of the input. So you can input multiple n number of inputs using a single scanf statement. But the first thing you have to mention is the type of the input. The type of the M1 is integer. Let's say if the type of M2 is float, then this must be %f. If the type of M2 variable is float, that means कि हम इसमें floating point value store करेंगे, then the type we mention in the scanf must be %f, not %d. But at the moment this is integer variable, so the type of the input is also int. So scanf function को कैसे पता चलेगा कि आपकी एक single input, so जहाँ पर हम scanf के through 5 inputs ले रहे हैं, 5 integer values ले रहे हैं, 5 different subject के marks input ले रहे हैं, how the scanf function knows कि एक subject के mark complete हो चुके हैं, enter हो चुके हैं. So there are 2 terminating points for the input. The first one is the space bar. So you can write a number, input a number. For example, if I run this program, compile and run it, for example, I input a number 30, then either I can press enter key or I can press space bar. So if I press space bar, this means this is the indication for the scanf function that the first input is completed, and that is 30. Let's say the second input is 40, then space bar, then the third input is 50, enter. Cursor अब नई लाइन पे क्यों आ गया? This is why, because you press the enter key. Space bar will produce a space, so that's why you have a space over here. So when you press enter key, it will move the cursor into the new line, but still it is waiting for the input. Let's say the input is 60 and then the input is 70. Now the 5 inputs are completed, so I have, when all the inputs are completed, you have to press enter key. जब enter key press करेंगे आपको वो result show कर देगा. Now let's see. So there's no if statement. This is just the else statement. There's no else block with any of the if statement mentioned in this program. So you have just if statement, one if statement, second, third, fourth. So this is the previous program जिसमें आपके पास else block भी था. This is the same program using logical operator, so there is no else block. So यहाँ पर इन दोनों प्रोग्राम में फ़र्क क्या है, इन दोनों प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में फ़र्क क्या है?
फ़र्क ये है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के मार्क्स बनने ग्रेटर देन 60%, right? So this PER is, let's say, 70. All the marks in the subjects are more than 70, so this is greater than 70, and greater than 70 is greater, let's say 71. 71 is greater than or equal to 60. This condition becomes true. So when this condition becomes true, it displays the message printf division first division. Now if logically, if you think logically, then if this statement is executed, अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है, then it should, there is no need to check this if and this if and this if, right? इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इस if की कंडीशन ट्रू है या इस if की कंडीशन ट्रू है और इस if की कंडीशन ट्रू है या नहीं है. Of course they are all false. अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, if की ये वाली ट्रू हो जाती है या if ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो इसके बाद वाली जो if की कंडीशन आ रही है वो ट्रू नहीं होंगी, वो फॉल्स ही होंगी. बट इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम आपको जो कंपाइलर है, जो कंट्रोल है, वो हर स्टेटमेंट, हर इफ स्टेटमेंट को चेक करेगा कि उसकी कंडीशन ट्रू है या नहीं है. फर्स्ट इट चेक्स दिस स्टेटमेंट, इफ दिस इज ट्रू it will print the message this one, then it check the condition over here, this condition will be false, then it check the condition over here in this if statement, this is also false, then it check the condition in this if statement, this is also false. जबकि नेस्टेड इफ एल्स के साथ जो हमने प्रोग्राम किया है वो एल्स ब्लॉक में कब आएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी. बट इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, इट प्रिंट्स द मैसेज फर्स्ट डिवीजन, देन इट कम्स आउटसाइड द एल्स ब्लॉक. सो ये जो एल्स ब्लॉक है, जो कि ये एल्स ब्लॉक इस इफ के साथ एसोसिएटेड है. इफ द कंडीशन इन दिस इफ इज ट्रू, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल प्रिंट द मैसेज फर्स्ट डिवीजन, then it won't come inside this else block. यहाँ पर नहीं आएगा, वो इस else block के बाद जो statement है, that is this statement, it will execute that statement, right? So उसने हर if को check नहीं किया. So the efficiency wise, this program is more efficient than this program. But you can write else over here, like else if, right? Else if करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे, that is possible. बट अगर प्रोग्राम आपने इस तरह से लिखा हुआ है जिसमें कोई एल्स इफ नहीं है, कोई एल्स ब्लॉक नहीं है, तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स इफ स्टेटमेंट्स हैं, दिस मीन्स दैट आपकी तमाम इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, तमाम इफ स्टेटमेंट की कंडीशन चेक होगी, राइट? नाउ लेट्स सी द सैंपल प्रोग्राम 2. And the sample statement of this program is a company insures its driver in the following cases. If the driver is married, if the driver is unmarried, male and above 30 years of age, if the driver is unmarried, female and above 25 years of age. So ये conditions हैं. So if all the conditions, if any of these condition is true, so condition number 1, if the driver is married, this is condition number 2. Condition number 2, if the driver is unmarried, male and above 30 years of age, so we have and. सो कंडीशन नंबर 2 जो है वो हमारे पास कंपाउंड कंडीशन है. उसमें पहली कंडीशन क्या आ रही है इस कंपाउंड कंडीशन में? द फर्स्ट कंडीशन इज इफ द ड्राइवर इज अनमैरिड, इफ द ड्राइवर इज मेल एंड ही इज अबव 30 ईयर ऑफ एज. तो 3 कंडीशंस मिला के एक कंपाउंड कंडीशन मिली है, ठीक है? और इन 3 कंडीशंस के दरमियान जो हमारे पास ऑपरेटर है वो एंड का ऑपरेटर है. अनमैरिड है और मेल है और 30 ईयर से अबव है, तब इसको इंश्योरेंस मिलेगी, तब कंपनी इसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी. एंड इफ द ड्राइवर इज अनमैरिड, फीमेल एंड अबव 25 ईयर ऑफ एज. सो थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो कंपाउंड कंडीशन, जिसमें हमारे पास 3 कंडीशन आ रही हैं और तीनों कंडीशन के दरमियान में हमारे पास एंड ऑपरेटर है. सो इफ द मैरिटल स्टेटस, जेंडर एंड एज ऑफ द ड्राइवर आर इनपुट, तो 3 चीजें आपने इनपुट लेनी है. मैरिटल स्टेटस, जेंडर एंड एज. ओके, मैरिटल स्टेटस और जेंडर किस तरह से इनपुट लेंगे? एज वी नो इज अ इंटीजर वैल्यू, सो वी कैन हैव अ वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल इंट एज, जिसमें हम एज इनपुट लेंगे. बट व्हाट अबाउट द मैरिटल स्टेटस और जेंडर? सो लेट्स से वी हैव अ कैरेक्टर वेरिएबल ms. ms stand for marital status and another character variable that is g, that is for gender.
सो हम इस करेक्टर वेरिएबल में ये ले सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि फॉर मैरिड पर्सन इफ द मैरिटल स्टेटस इज मैरिड जस्ट प्रेस M, or if it is unmarried just press U. So you get a single character, and that single character you can store in a character variable. Similarly, for the gender, you can ask the user if the driver is male, press M, if the driver is female, press F. So you get again a single character that you can store in a character variable. So if these three things are input in the program, write a program to determine whether the driver is to be insured or not. So we have to display the message driver is insured or it is not insured, right? We have to take the input marital status, gender and age. Let's see the flow chart. So you can see the flow chart. There's a very big decision block, and this decision block contains many conditions. Okay, we will go one by one. So first we display the message, enter marital status, gender and age. So we read MS, that is the marital status. User either enter M for married or U for unmarried, right? And G is gender, M for male, F for female, and age is an integer value. So then you check the condition. If MS is married, if the marital status of that driver is married, then there's no need to check other condition, because this is condition number 1 or this is condition number 2. starting इसकी bracket हो रही है और इसकी closing bracket यहाँ पर आ रही है, and then we have or and condition number 3. So if any of these condition is true, then it display the message driver is insured. So any of these condition में 3 conditions आ रही हैं, इनमें से एक तो बड़ी सिंपल कंडीशन है और 2 जो है वो कंपाउंड कंडीशंस हैं. दैट मीन्स कि वो दोनों कंडीशंस डिफरेंट कंडीशन से मिलके बनी हैं. दिस इज फर्स्ट कंडीशन. दिस इज सेकंड कंडीशन, दैट इज अ कंपाउंड कंडीशन, एंड दैट कंडीशन कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट कंडीशंस. इसमें MS इज मैरिड, अनमैरिड, G इज मेल एंड एज इज ग्रेटर देन 30. एंड दिस इज द थर्ड कंडीशन, MS इज अनमैरिड, G इज फीमेल एंड age is 25, greater than 25. So in तीनों condition के दरमियान आपके पास और का operator आ रहा है. That means if any of these condition is true. Now let's see the program using logical operators. because इस condition में हमारे पास logical operators आए हैं. कौन कौन से logical operators है? AND operator है, we have another AND operator, then we have this is OR operator and operator within the compound condition. ठीक है, तो हमारे पास OR operator भी use हो रहा है और AND operator भी use हो रहा है. Let's see the program. Now these two are character variable. Gender is a character variable, and you can write marital status as it is without any space or comma, but you can put underscore, or you can simply write MS. And then age is an integer variable. You first display the message, enter age, gender, marital status. So this message will be displayed. Then the scanf function. So you are going to take input, 3 inputs. The first input is integer, second is gender, third is also and marital status. So this first input is integer type, the type of second input is character, and type of third input is also character, right? Then this is your condition number 1. That is very simple, a single condition if the marital status is M. So let's say we can write over here, तो मैसेज डिस्प्ले करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं M और U, right? And for gender we can write M or F, so that the user knows कि उसको क्या एंटर करना है. So M stands for married and U stand for unmarried. For gender, M stand for male, F stand for female, right? So this is second condition, and that is a compound condition, because ये जो कंडीशन है आपके पास 3 कंडीशन से मिलके बनी है और इन 3 कंडीशन के दरमियान एंड आ रहा है. इसका मतलब है कि इन तीनों कंडीशंस को ट्रू होना चाहिए if this whole condition become true, right?
इसी तरह से यहाँ पर भी ये भी आपके पास एक कंपाउंड कंडीशन बन रही है. सो इफ स्टेटमेंट, इफ की जो कंडीशन है, एंड दिस इज ऑल्सो कंपाउंड कंडीशन. ठीक है, ये कंडीशन एक लाइन में पूरी नहीं आ रही थी, इसलिए इसको मैंने सेपरेट एक लाइन में लिख दिया है, बट देयर इज नो प्रॉब्लम इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. राइट, सो लेट्स compile this program first and execute it. Now enter age, gender, marital status. So let's say the person is married. Then I press the space bar and the gender is F, that is female, and the marital status, I think मैंने इनपुट गलत दे दी थी. सो लेट्स राइट इट अगेन. सो द फर्स्ट थिंग इज एंटर एज. सो द एज इज लेट्स से 23 and the gender is male and the marital status is also married. So what should be the output if the driver is insured or not? You remember the first condition, if the driver is married, you're not going to check any other condition. But if he is unmarried, then you check. If he is male and age is greater than 30, then he is insured. If he is unmarried and if the driver is female and the age is greater than 25, then he is insured. But if the driver is male, the marital status is M, that means he is married, so you won't check, the program won't check the other two condition. So it displays the message and suddenly it disappears. Why? Because we haven't put a system pause over here in the program. So let me write system pause semicolon. Now I make the changes in the program. I have to compile it first, close, then execute it. Now first we have to enter age. The age is, let's say, 23. Gender is, let's say, female, and marital status is, let's say, married. Now when you press enter key, it displays the message driver is insured. Press any key to continue. There's another thing. आपने इस प्रोग्राम में देखा है कि मैंने जो मैरिटल स्टेटस चेक कर रहा हूँ वो कैपिटल एम के साथ चेक कर रहा हूँ, नॉट विद द स्मॉल एम. सो इफ आई एंटर स्मॉल एम इन माई प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल इफ आई रन इट, एग्जीक्यूट इट, सो द एज इज लेट्स से 25, gender is male, and let's say marital status is M, that is a small m. It displays the message driver is not insured because in my program जो मैं चेक कर रहा था मैरिटल स्टेटस को वो कैपिटल एम के साथ कर रहा था, स्मॉल एम के साथ नहीं कर रहा था. अगर यूज़र ने कैपिटल एम इनपुट नहीं किया तो वो उसको, अगर स्मॉल एम इनपुट किया है तो वो उसको कैपिटल एम कंसिडर नहीं करेगा, बिकॉज दोनों की आस्की वैल्यूज डिफरेंट हैं. कैपिटल एम की आस्की वैल्यू डिफरेंट है और स्मॉल एम की आस्की वैल्यू डिफरेंट है. सो बेसिकली ये जो कंपैरिजन कर रहा होता है यहाँ पर कैरेक्टर्स का, एम एस, और ये जो कैरेक्टर कांस्टेंट है जिसको आप सिंगल कोट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैरेक्टर का कंपैरिजन कैसे होता है? कंपैरिजन तो हमेशा ऐसी चीज़ों का होता है जिनको आप क्वांटिफाई कर सकें. यू कैन काउंट दोज थिंग्स, राइट? सो एम को आप कैसे काउंट कर सकते हैं? यू कैन नॉट काउंट एम, और यू कैन नॉट काउंट द वैल्यू दैट इज स्टोर इन एम एस वेरिएबल, because that value is also character. So how that comparison is performed? This comparison is actually performed between the ASCII values of those characters. So यहाँ पर ms variable की जो ASCII value है, ms variable में जो value store है, for example if it is capital M, तो capital M की ASCII value will be compared with the ASCII value of capital M, and they are equal. And if the ms contains a small m, वेरिएबल स्मॉल m, जिस तरह अभी मैंने एग्जीक्यूट किया था प्रोग्राम में, और मैंने इनपुट में कैपिटल m के बजाय स्मॉल m इनपुट किया था, तो इस पर्टिकुलर केस में इट विल कंपेयर द ASCII वैल्यू ऑफ स्मॉल m विद द कैपिटल M, एंड देन दिस कंडीशन बिकम फॉल्स. ठीक है?
आप इन दोनों को इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं आपस में. फॉर एग्जाम्पल you can write over here or ms is equal to small m. Now the condition is this one कि small m भी अगर यूजर ने इनपुट कर दिया तो तब भी उसको वो कंसिडर कर लेगा. Now if I run that program, compile it, before running I have to compile because I made the changes in the program. Now executing this program, so let's say the age is 23, gender is male. Now the marital status is M, small m. It displays the message now driver is insured. So you can change this capital Ju or small Ju as well here. अगर यहाँ पर यूजर अनमैरिड में स्मॉल जू एंटर करे और कैपिटल जू एंटर करे तो वो इन दोनों प्रोग्राम दोनों को हैंडल कर ले. ऐसा ना हो कि प्रोग्राम हैंडल ना कर सके. सो यू कैन डू इट लाइक दिस सेम वे. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम. नाउ लेट्स गो टू द प्रोग्राम विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर यूज नहीं हो रहे. This is the program. You can see this program is a little bit bigger. So we have here a condition. So जहाँ पर जैसे पहले प्रोग्राम था लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ, this one, इस प्रोग्राम में हमने एक इफ कंडीशन में तमाम चीजें कंडीशंस डाल दी हैं और उनमें से चेक कर लिया कि अगर एनी ऑफ दोज कंडीशन, बिकॉज वी हैव और any of those condition is true, display the message driver is insured. But in the nested if else, हम पहले check करेंगे if the driver is married. If it is, then we'll simply display the message driver is insured. But if he's not married, we can incorporate small m as well, or ms is equals to small m, right? बट अगर वो मैरिड नहीं है तो वो एल्स पार्ट में आ जाएगा कंट्रोल. एल्स पार्ट में आके चेक करेगा इफ द जेंडर इज मेल एंड द एज इज ग्रेटर देन 30, देन he is insured, otherwise he is not insured. And if he is unmarried, एल्स पार्ट में आ जाएगा. एल्स पार्ट में आने के बाद इफ को चेक करेगा इफ द जेंडर इज मेल, व्हाट इफ द जेंडर इज फीमेल, एफ. सो दिस कंडीशन बिकम फॉल्स. अब वो इस इफ के जो एल्स ब्लॉक है, दैट इज दिस एल्स ब्लॉक, वो उसमें आएगा. सो आप देख सकते हैं कि मैंने हर एक को इसके राइट लेफ्ट इंटेंडेशन के साथ लिखा है. इसकी जितनी लेफ्ट इंटेंडेशन है उतनी ही इसके एल्स ब्लॉक की लेफ्ट इंटेंडेशन है. जितनी इस इफ की लेफ्ट इंटेंडेशन है उतनी ही लेफ्ट इंटेंडेशन इसके एल्स ब्लॉक की है. नाउ दिस इफ एल्स इज इनसाइड दिस इफ स्टेटमेंट. सो इस इफ का जो ब्लॉक है उसके अंदर ये इफ एल्स आ रहा है. सो इफ द जेंडर इज फीमेल, इट विल कम इन द एल्स ब्लॉक. It will check the age. If the age is greater than 25, it display the message driver is insured. If the age is not greater than 25, it display the message driver is not insured. And then the program exits, right? So age is, let's say, 26, gender is F and unmarried. So unmarried है वो अब कंडीशन में अंदर आएगा एंड चेक करेगा जेंडर फीमेल है और एज इज ग्रेटर देन 25 है, देन ड्राइवर इज इंश्योर्ड, राइट? And or are useful in the following programming situations. When after testing several conditions the program outcome is only one of the two answer. कि आपने एक कंपाउंड कंडीशन बना दी है जिस तरह से हमने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ व्हेन वी सॉल्व द प्रॉब्लम, जिसमें वी हैव टू टेल द ड्राइवर इज इंश्योर्ड और नॉट. इसमें एक ही इफ के अंदर वी हैव अ वेरी बिग कंडीशन, so we combine all those part of that condition, smaller condition, using the logical operators. And when it is to be tested whether a value fall within a particular range or not, कि वैल्यू एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर फॉल करिए या नहीं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू चेक द एक्स इज विद इन द रेंज ऑफ मिन एंड मैक्स, यू कैन यूज अ वन कंडीशनल ऑपरेटर, वन लॉजिकल ऑपरेटर.
So आप एक कंपाउंड स्टेटमेंट लिख सकते हैं यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर, and that is a single compound statement, single condition. Let's go to and write the program. Okay, so I have to first write include main, that is the opening and the closing bracket of the main statement. Okay, integer x comma min comma max. Okay, let's say min is equal to 10 and max is equal to 100. Now we take an input from the user, printf, enter an integer value using scanf statement. हम इस वैल्यू को इनपुट लेंगे %d because the type of the input is integer and the memory address that is associated with the variable x is AND_x. Now अब हमारे पास यहाँ पर कंडीशन है, if x is greater than or equal to 10, remember this thing, this is greater than or equal to sign, and x is less than or equal to 100. So यहाँ पर और ऑपरेटर नहीं आ सकता, यहाँ पर एंड ऑपरेटर आएगा. दैट मीन्स इस कंडीशन को भी ट्रू होना चाहिए और इस कंडीशन को भी ट्रू होना चाहिए. देन वी डिस्प्ले द मैसेज. X is within range /n and system pause. Okay, यहाँ पर एंड का ऑपरेटर इसलिए आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, if the number is 50, then this condition is true. Yes, this condition is true. This is also true. So why not we have and over here? Okay, but what if the value of x is, let's say, 150? Now this condition is true. 150 is greater than or equal to 10. That is true. Or this condition is false. So we have or over here, true or false. That means true. So it will display the message printf x is within the range. So that's why we have or over here. This means that both condition must be true. Right? Let's first compile this program and execute it. Okay, now you can see it clearly. Enter an integer value. Let's say I put the integer value is 12, x is within the range. So we can have else part over here. X is out of range /n. Right? Let's compile and run it. Let's say the value of x is -1, 2. It says x is out of range. Now you can see you can use the logical operator where you have to check the range of a variable. Let's say this is the example program 3. जिसमें you have to write a program जिसमें आप 3 चीज़ें input लेनी है, gender, year of service and qualification, and then your program display the salary. You have to check these 3 conditions. आपने 3 चीज़ें input लेनी है, post graduate, graduate, 2 education level इसमें रखे हुए हैं. Let's say 1 is graduate and 2 is post graduate. You can define this thing in your program. Like marital status के लिए आपने M define किया और unmarried के लिए आपने U define किया. So marital status could be M or could be U. So इसी तरह से qualification could be 1 or 2. So 2 means postgraduate and 1 means graduate. And year of service, it's an integer value. And gender, M or F. Then you have lot of conditions and then you can display the salary. Right? So आपने इसमें तीनों चीज़ें check करनी है. If the gender is male,
year of service is greater than or equal to 10 and the qualification is postgraduate, then the salary you have to display is 15,000. So I leave this program to you guys. You can solve it. If you have any problem, you can email me the code and the problem you are facing. Let's revise the hierarchy of operators, because now we have logical operators as well. So what if there are logical and arithmetic operators in the expression, then in what sequence we have to solve it. So before going into the detail, I tell you that the parenthesis has the highest priority. So if you have an expression like a multiplied by b plus c, there is no parenthesis, so first the multiplication will be performed. If we have an expression like a multiplied by b plus c and b plus c are in the parenthesis, then we have to perform b plus c operation first, right? So सबसे जो highest priority, that is logical not operator, then arithmetic operators में जो multiplication है, division है and modulus operator इसकी priority है, then addition and subtraction, then relational operator less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, then relational operator is equal to and not equal to, and operator, or operator, and then assignment operator. So सबसे last में आपने assignment करनी होगी. Caution between assignment and equity operator. So if I write I is equal to 5, so मैंने यहाँ पे value check करनी थी, क्या I की value 5 के बराबर है? If it is, then I display the message you enter 5. If it is not, I display the message you enter something other than 5, right? So I forgot to put two equal signs, because in C you must have to write two equal signs to equate two things. Okay? So if I forget this thing, then what happens? It always display the message you enter 5, even if you won't enter 5. So even if the value of I is 10, for example, in above the if statement आपने value input ली थी I की and user ने enter कर दिया 10. Now this is the assignment statement. If I is equal to 5 is the assignment, so value of I will be assigned to 5. Now the condition become if 5, or if 5 is non-zero value, that means true. So this condition will always be true. ये हमेशा true रहेगी. Null statement. Some of you, while starting the if else or if statement, while writing the program using if or if else statement, यहाँ पर you start putting semicolons. यहाँ पर semicolon डालने का मतलब ये है कि this if statement terminates over here. आपने डबल इक्वल का साइन तो लिख दिया, बट यहाँ पर ये इक्वल सेमीकोलन डाल दिया, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है. इट वोंट, जो इसके बाद जो इस इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट आ रही है उसकी एग्जीक्यूशन इस कंडीशन पर डिपेंड नहीं कर रही. ठीक है. सो यहाँ पर सेमीकोलन डालने का मतलब ये है कि इफ स्टेटमेंट यहाँ पर टर्मिनेट हो गई है. सो इस इफ स्टेटमेंट के बाद जो भी स्टेटमेंट आ रही है उसकी एग्जीक्यूशन इस की कंडीशन पे डिपेंड नहीं करेगी. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, दिस printf विल बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज देयर इज अ सेमीकोलन आफ्टर दिस इफ स्टेटमेंट. ठीक है. सो इन दोनों चीज़ों के लिए अपने आप को आपने अलर्ट रखना है कि इस तरह के एरर नहीं करने while writing a program. Now comes to the conditional operator. A general form of conditional operator is we have expression 1, then question mark, expression 2, colon, expression 3 and then semicolon. So ये जो एक पूरी expression बनेगी, this is called a compound expression. ये आपके पास एक expression बनेगी. So a single conditional operator is a single expression जो कि 3 expression से मिलके बने हैं. Conditional operator, question mark and colon are sometimes called ternary operators. If expression 1 is true, then the value returned will be expression 2, otherwise the value returned will be expression 3. Let's see an example. So this is expression 1, right?
and if this expression is true, then the value returned is 3, and if this is false, value is 4. So expression 1 जो usually conditional operator में use की जाती है, that is a condition. It could be a single condition or it could be a compound condition. So if that condition is true, the expression 2 will be executed. If that condition is false, expression 3 will be executed. ठीक है? So जहाँ पर अगर ये condition false हो जाती है, तो 4 will be assigned to y. If this condition is true, 3 will be assigned to y. The equivalent if statement will be x greater than 5, then y is equal to 3. If this condition is true, then 3 will be assigned to y. If this condition is false, then 4 will be assigned to y. If this condition is false, 4 will be assigned to y here, right? Another form. So मैंने को पहले बताया था कि it's not necessary कि आपके पास यहाँ पर एक सिंगल कंडीशन हो. यू कैन हैव अ कंपाउंड कंडीशन जिसमें आपके पास दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस हो सकती हैं. नाउ द एक्सप्रेशन 1 इन दिस कंडीशनल ऑपरेटर, सो दिस इज अ कंडीशनल ऑपरेटर, दिस इज एक्सप्रेशन 1 दैट इज अ कंडीशन, देन वी हैव अ क्वेश्चन मार्क, this is expression 2 that is just 1, then expression 3 that is just 0, and we have a semicolon in between. So 1 value y को assign होगी. कब होगी assign? जब ये condition true होगी, and value 0 will be assigned to y when this condition becomes false, right? Now अब ये ज़रूरी नहीं है कि conditional operator आप just assignment के लिए use करें. You can have expression 2 और expression 3 a printf statement or a scanf statement, but only a single statement should be there. ठीक है? So अब यहाँ पे condition check कर रहे हैं. If I is equal to 1, if this condition is true, then this printf will be executed. If this condition is false, then this will be executed. So you can easily see that this is almost equivalent to if else statement. Why I say almost? Because there are certain limitations of conditional operator. इसको अभी जाके हम देखेंगे आगे. So इस particular example में अगर ये condition true हो जाती है, I is equal to 1. If this condition is true, then this printf will be executed only. If the condition is false, then the second printf will be executed. You can use conditional operator within printf statement as well. So अब देखिए आप इस conditional operator की आउटपुट क्या आएगी. या तो a जो वेरिएबल है वो आएगा, या ये जो कैरेक्टर कांस्टेंट है that is not sign वो आउटपुट में आएगा आपके पास. और जब आउटपुट में आएगा तो आउटपुट में आने के बाद यहाँ पर प्रिंट भी हो जाएगा. सो फर्स्ट इस पूरे printf स्टेटमेंट में जो एग्जीक्यूट होगी चीज दैट इज द कंडीशनल ऑपरेटर. जो कंडीशनल ऑपरेटर की जो आउटपुट आएगी, then that will be used by the printf statement, and then the printf statement will be executed. ठीक है? तो यहाँ पर आपने कहा कि a is equal to z है. The condition is a is greater than or equal to z. Now z is greater than or equal to a. So z की ASCII वैल्यू, small z की ASCII वैल्यू है I think 122, और small a की जो ASCII वैल्यू that is 97. So 122 is greater than or equal to 97. I told you before कि whenever the characters are compared, तो basically उनकी ASCII values compare हो रही होती हैं. ठीक है? So 122 is greater than 97. Condition is true. So condition is true. So output क्या आएगा? A variable. Now the next statement will become printf %c comma a. So you are going to print the value of variable a. So the z will be printed on the screen. ठीक है? Now this is an example of nested conditional operator. You can see this is a outer conditional operator, and within the outer conditional operator you have a nesting, one conditional operator and a second conditional operator. So इस conditional operator की condition है statement 1, sorry, expression 2, expression 3, condition, expression 2, expression 3. So this is a condition, this whole is expression 1, and this whole is expression 2 for the outer conditional operator.
सो वी हैव आउटर कंडीशनल ऑपरेटर, और उस आउटर कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर दो कंडीशंस आ रही हैं. The limitation of conditional operator is that after the question mark or after the colon only one C statement can occur. So अगर आपके पास if else, जिस तरह आप if else में लिखते हैं, if block में you can have more than one statement easily. You can write n number of statement in if block or you can write n number of statement in else block. But conditional operator में you just have one statement. अगर ये condition true होगी, you have just one statement. This is a single statement. और ये जो single statement है ये आपके पास conditional operator है. So conditional operator itself a single statement, a single compound statement basically, जो कि different statement से मिलके बना है. But you cannot have a multiple statement over here, right? Like for example, in this program, आपके पास if block में you have multiple statement, printf, and then you have a statement that is arithmetic operation and assignment. So आपके पास दो statements आ रही हैं. अगर आपसे कहा जाए कि इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करें कंडीशनल ऑपरेटर में, so it is not possible to convert this program into conditional operator. Why? Because अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, we have to execute two statements, right? So it is not possible for the conditional operator कि जब अगर condition true हो जाएगी तो expression 2 में we can write two statements. We can only write one statement. So this is the block we have to convert into expression 2. We have to write in place of expression 2. So अगर यहाँ पे just printf होता या just ये arithmetic expression होती तो it is possible to convert. But अगर ये नहीं है then it is not possible to convert. This means that it is not possible to convert every if-else block into conditional operator, but it is possible to convert every conditional operator into if-else block. The other way around is it is possible to convert every conditional operator into if-else block, but it is not possible to convert every if-else block into conditional operator. उसकी एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने दे दी है कि लाइक इस if-else block को कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है. Because in the conditional operator we have expression 1, expression 2 and expression 3, and expression 1 is a condition, expression 2 is a single statement, expression 3 is also a single statement, right? And expression 2 की जगह हमें ये दो statements लिखनी है and that is not possible. ठीक है? You have to write just a single statement over here. So let's have an example program using conditional operator. Determine whether the character input through the keyboard is the uppercase alphabet or not. So आपने कोई भी character input लेना है और check करना है कि वो character is uppercase alphabet or it is not an uppercase alphabet. So किस तरह करेंगे, उसकी ASCII value से check करेंगे. Let's go and write the program. So uppercase alphabet की जो ASCII value है, upper A की ASCII value that start with 65 and I think upper Z की ASCII value है that is 90 ASCII value. So let's write the program. Okay, so we have to take a character input. So for that we have to define a character variable. Let's say C is a character variable. Printf, please enter a uppercase letter. Scanf %C, because the input type of the input is a character, and then comma, and the memory address, memory that is associated with C, we can access it using AND operator and C. Now we have to check if C is greater than or equal to
A and C is less than or equal to Z. Then we have printf upper case letter else printf other, right? Then system pause. Okay, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली अल्फ़ाबेट के साथ कंपेयर कर लिया. I can also write here ASCII value 65 and 90. Say compile that program, okay, then run it. Let me change the screen setting so that it is visible to you guys. 75. Now it's visible. Please enter an uppercase letter. Okay, so I input a lowercase letter, so it display the message other. So compile it again, run it, and now I enter a uppercase letter, so it displays me the message uppercase letter. That is all for the lecture today. Let me summarize the lecture. In this lecture, we see what is a nested if-else construct. I have shown you the program using nested if-else. Then I tell you about the logical operator, how we can use the logical operator to make compound statements. And then I tell you about the conditional operator and the limitation of the conditional operator and some forms of the conditional operators, and I show you example program. In the next lecture I will tell you about the nested conditional operators, and we also do some example programs.